I welcome you all in the series of lecture which is being conducted by our college on communication skills and personality development. Good morning, students. It is a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk us about analytical thinking, and this subject in which we should all be deeply interested in, because analytical thinking is really helpful to grow your personality. Our speaker has done her MA in English as well as MA in Linguistics and MA in Marathi, and she has recently qualified her SET examination in English. She has received 2 gold medals and 1 silver medal for economics in BA. She has 6 years of teaching experience at undergraduate and postgraduate level in the same college, that is S.B.City College. She also composes Marathi poetry. Now I would like to call upon Amrapali Modak ma'am to enlighten us about analytical thinking today. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. Today, I am Amrapali Modak is going to start a new topic that is analytical thinking. Okay. So, what does it mean? That is again a question in our mind. First, we will think about analytical, and then we will think about thinking. So, analytical means what? Analytical means that problem which actually we are unaware of. Okay, ऐसे कुछ problems होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता. So many things are there which we can do easily. Okay, but some things are there which are difficult to understand. Some things are happening suddenly. कुछ चीजें ऐसी हैं कि suddenly हो जाती है, समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ. और ऐसे टाइम में जब कोई चीज suddenly हो जाती है तो वो टाइम पे कैसे उस चीज को solve करना है. कोई भी चीज, कोई भी काम जब प्रॉब्लम बन जाता है और जब हम उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढने लगते हैं, then we can say it is a analytical प्रॉब्लम. ओके, ऐसा कुछ कि जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो यानी इतना साधारण नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जिसको सॉल्व करना. दैट इज नोन एज एनालिटिकल. एनालिटिकल मींस समवॉट कॉम्प्लेक्स, somewhat difficult, somewhat critical, okay, which cannot be simply understand. That is known as analytical. Okay, thinking. अब थिंकिंग की तरफ जाते हैं. थिंकिंग मींस सोचना, यानी हम हमेशा ये काम करते रहते हैं सोचने का. 24 आवर्स में अगर हमने 7 घंटे 8 घंटे की अगर हम नींद लेते हैं, बट आफ्टर दैट वी आर मीन्स फ्रॉम 7 o'clock और फ्रॉम 8 o'clock to till night 10 o'clock we are just thinking again and again. So many thoughts, so many action thought processes are coming in our mind. Okay, so thinking का जो ये जो काम है, it is involuntary. ठीक है, थिंकिंग का काम जो है वो इनवॉलेंटरी काम है. व्हाट इज मीन बाय इनवॉलेंटरी? इनवॉलेंटरी मींस ना चाहते हुए काम करना. ठीक है, यानी जिस तरीके से हम देखने का काम करते हैं, जिस तरीके से हम ब्रीथिंग का काम करते हैं, उसी तरीके से ये जो वर्किंग है एनालिटिकल थिंकिंग, यानी थिंकिंग का जो काम है, ये एकदम ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता कि हम सोच समझ के कुछ सोच रहे हैं. सोच जो होती है वो आती रहती है, कभी अच्छी भी आती है, समटाइम्स पॉजिटिव थिंकिंग, समटाइम्स नेगेटिव थिंकिंग आल्सो कम इन आवर माइंड. ओके, सो जिस तरीके से अपने देखने का काम है, जिस तरीके से हम सांस लेने का काम करते हैं, उसी तरीके से हम थिंकिंग का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं. ठीक है, सो अब इस सोच को, ये जो हम सोच की बात करते हैं, जो सोच का काम हम करते हैं, तो इसमें हम तय नहीं कर पाते. We are thinking a lot, but we cannot decide. Okay, we cannot come to the conclusion. एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, डिसीजन नहीं निकाल पाते, दिन रात बस सोचते रहते हैं हम, बहुत सारे ख्याल अपने माइंड में आते रहते हैं. ओके, बट इट इज अनेबल टू कम ऑन द कंक्लूजन. और इसी वे में, इसी तरीके से हमारी जो थिंकिंग है वो एनालिटिकल नहीं हो पाती. ओके, तो उसको एनालिटिकल थिंकिंग में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फोकस्ड करना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द के एरियाज को आपको देखना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पे हम थिंकिंग करते रहते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारे कुछ बॉन्ड बने रहते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम आगे की चीजें सोचा करते हैं. बट इससे क्या होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें एक गैप पड़ जाती है.
हम न्यू आइडियाज नहीं हमारे माइंड में आ पाते, नई तरीके से नई विचारधारा नई सोच हमें नहीं आ पाती, जिसके वजह से पुराने ही सोच में पुराने ही ओल्ड आइडियाज के ऊपर हमारी जो थिंकिंग है वो बनी रहती है. ओके, सो दिस इज नोन एज, this is the rough idea actually of analytical thinking. Okay, come to the next slide. See, so see, I'm going to give you a question. You have to solve the question. This is very simple question. अब ये एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, ये आप अपने माइंड प्रोसेस से, अपने ब्रेन प्रोसेस से आप ये खुद प्रूव करेंगे. इस एक लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. इसमें हमारा ब्रेन, हमारा सोल, हार्ट कॉन्सेंट्रेट होना कितना जरूरी है. सी द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर. सो देयर इज द स्क्वायर एंड उस स्क्वायर में कुछ शेप बने हुए हैं, कुछ ट्रायंगल्स है, कुछ स्क्वायर बने हुए हैं. तो और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 36 एंड ऑप्शन डी 40. सो यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन चैट बॉक्स. नाउ सी, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सो जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे कि ये है क्या. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डू एनी वर्क, सो वी नो द प्रोसेस ऑफ दैट वर्क. Most of the time the works daily that we are going to do, we know its process, we know the process as well as we know the results. Okay, जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं, आपको प्रोसेस पता है, खाना कैसे पकाना है प्रोसेस आपको पता है उसकी. लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जब प्रॉब्लम होता है तब एनालिटिकल थिंकिंग का काम पड़ता है. तो जब आप खाना बना रहे हैं इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब बैठे बैठे खाना ही खराब हो जाए, जब बैठे बैठे कुछ उसमें कुछ अलग ही हो जाए, तो वो टाइम पे क्या करें हम. सडनली समथिंग हैपन, suddenly issues entered in our mind, suddenly something different has been happened. कुछ अच्छा करते करते हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उस एक्सपेक्टेशन के यानी अगेंस्ट में कुछ हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम बन जाता है. और तब बात आती है एनालिटिकल थिंकिंग की. ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है. सी, all the electricity was out in the town. This is the question for you. First, I had given you the first question that you have to solve this. Okay, this is question number 26 that has been written here. So you have to solve this and you have to write your answer in chat box. Okay, come to the second question. All the electricity was out in the town and none of the street lights or traffic signals had power. A man was driving his black car with its headlights broken. A buffalo suddenly stepped onto the street, although there was not even moonlight. Driver stopped to let the buffalo cross the road. How did the driver see the buffalo? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैरियर क्या जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात तो ये होगा कि आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी. दूसरी बात ये प्रॉब्लम आ सकता है आपको कि लैंग्वेज बैरियर. ओके, सो शायद लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, या फिर इतने सारी आइडियाज को, इतने बड़े क्वेश्चन को एक साथ आप क्या नहीं कर पा रहे होंगे, कैप्चर नहीं कर पा रहे होंगे. सो सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इज कमिंग इन द एनालिटिकल थिंकिंग. सी दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ऑल द इलेक्ट्रिसिटी वाज आउट इन द टाउन. शहर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी. एंड नन ऑफ द स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल्स हैड पावर. और रास्ते के जो दिए होते हैं, जो रास्ते के जो लाइट्स होते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनमें भी कोई पावर नहीं था, यानी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रहे थे और ना ट्रैफिक सिग्नल्स. ओके, अ मैन वाज ड्राइविंग हिज ब्लैक कार. और उसी समय में एक इंसान अपनी ब्लैक कार चला रहा है विथ इट्स हेडलाइट्स ब्रोकन. और उस कार के हेडलाइट्स भी ब्रोकन हो चुके हैं. अ बफेलो सडनली स्टेप ऑन टू द स्ट्रीट. और सडनली उसी रास्ते से एक बफेलो जो है वो अपना रास्ता क्रॉस करते हुए जा रही है. ऑल्दो देयर वाज नॉट इवन द मूनलाइट. एक ऐसा समय है कि मूनलाइट भी नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, मूनलाइट नहीं है, और कार के जो हेडलाइट्स है वो भी ब्रोकन हो चुके हैं. ऑल्दो देयर वाज नॉट इवन मूनलाइट. ड्राइवर स्टॉप टू लेट द बफेलो क्रॉस द रोड. फिर भी ड्राइवर ने अपनी कार को स्टॉप किया जब उसने बफेलो को देखा. So how did the driver see the buffalo? That is the question. तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके माइंड में कितने आइडियाज आने स्टार्ट हो गए. ओके,
So this is the question which we can say it is belong to the analytical thinking. You also have to guess the answer of this question and write the answer in chat box. जो भी आपके guessings होंगे, conclusions होंगे, जो भी आपके mind में उसका answer होगा, आप जो भी सोचोगे, so you have to give your result in the chat box. Okay. See the question again. All the electricity was out in the town and none of the street light or traffic signals had power. A man was driving his black car with its headlights broken. A buffalo suddenly stepped onto the street. Although there was not even moonlight, driver stopped to let the buffalo cross the road. And how did the driver see the buffalo? This is the question. Okay. Come to the next slide. See, this is the definition. What does it mean? Analytical thinking actually is very, very important in a student life, very important in business life, very, very, very important in a life which leads to be an ideal life. Okay, एक ऐसी लाइफ जो आइडियल लाइफ बनना चाहती है, जो एक आदर्श लाइफ बनना चाहती है, एक ऐसी लाइफ की जिसमें सिंप्लिसिटी तो हो लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स भी हो, साथ में ऐसी कुछ स्पेशलिटी हो कि जो अपने बारे में और किसी के बारे में डिटेल सोच सके. So that is the rough idea about analytical thinking. But see, there are some definitions has been given. It is a kind of thinking which is about simplifying complexities. Means this is a kind of thinking. Analytical thinking means क्या है? एक तरीके की thinking है, एक प्रकार की ऐसी thinking है which is about simplifying complexities. Means जो भी complex ideas आपके mind में आ रहे हैं, जो भी complexities आ रही है, उसको simplified करना. ऊपर का आपने question देखा होगा. एक जो कार ड्राइवर जो आगे जाने वाला है उसका आपने वो क्वेश्चन देखा होगा. उसमें क्या है उस क्वेश्चन एक बार आप देखोगे पढ़ोगे यू विल सी द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द क्वेश्चन. यस नो, आपको उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आएंगे उस क्वेश्चन में. एक इसमें उसको पढ़ नहीं पाओगे लेकिन उसके थोड़े अगर आप पार्ट्स करोगे, उसको पीसेस में बांटोगे, उसके एक एक पार्ट को आप समझने की कोशिश करोगे, तब आपके माइंड में वो सिंपल होते जाएगा. I already have given you the question. You have to write the answer in chat box. Okay. So, have you seen the slides? Yes, ma'am. Okay. So, definitions. This is, what does it mean? This is a kind of thinking which is about simplifying complexities. ऊपर का question हमने देखा, question थोड़ा सा complicated लग रहा है. Yes? So, इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको छोटे छोटे पार्ट्स, उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकालने पड़ेंगे. उस छोटे छोटे पार्ट्स को पहले पढ़ना पड़ेगा और उसकी एक आइडिया, एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करनी होगी. Okay, so whenever you are going to look at the question, that time you have to be more focused on that question. You have to make the pieces of that question. Okay, so it is a kind of thinking which is about simplify the complexity. Okay, simplifying complexity. Analytical thinking is the act of breaking down the pieces of information. Whatever the information I had given you before in the two questions, what you have to do, you have to break those informations into pieces. Okay, so act of breaking down the pieces of information into smaller and more understandable components or the principle. इतने उसके पीसेस करने हैं ताकि आपको वो छोटे छोटे सारे टुकड़े आप समेट सके, वो छोटे छोटे सारे टुकड़े आप अरेंज और रीअरेंज कर सके. ठीक है, उन टुकड़ों को आप समझ सके. एक सेंटेंस के, एक जो लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है, एक जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, उसको आपको क्या करते आना चाहिए? यू हैव टू मेक इट इन अ स्मॉल पीसेस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पीसेस एंड देन यू हैव टू रीअरेंज दोस पीसेस. देन द क्वेश्चन विल बी सिंप्लीफाइड इन योर माइंड एंड योर माइंड विल से द आंसर्स. Okay, so this is the second definition of analytical thinking. Analytical thinking is the act of breaking down pieces of the information into a smaller and more understandable component or principle. Okay. It involves systematically dismantling data to know the facts which can be used to build upon information of provide evidence-based conclusion. So it involves systematic dismantling data. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक आइडिया जब जिसको अपने माइंड में बन जाती है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर ट्रिक जब अपने सामने होती है, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो सिस्टमैटिकली अपने माइंड में जब वो अरेंज हो जाती है एंड देन इट गिव यू द रियल फैक्ट्स. क्वेश्चन अपने साथ बोलने लगता है, क्वेश्चन बताने लगता है कि यही मैं हूँ, यही इसका आंसर है. लेकिन तब जब
आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. ओके, so it involves systematically dismantling data to require to know the facts which can be used to build upon the information. जो कैसे हो सकता है, you have to build upon the information. जो information आपने कलेक्ट की है, वो जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उस क्वेश्चन के आप छोटे छोटे पीसेस करेंगे और छोटे छोटे पीसेस को आप समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को आप समझेंगे कि कैसे वो ड्राइवर निकल रहा था, रास्ते का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहां पे सामने फिर कौन आया, कौन कौन सी जगह पे लाइट्स नहीं थे, फिर उसका यानी अपने माइंड में आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे और तब जाके कंक्लूजन आपके सामने आएगा. ओके, सो जो इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में होंगे, जो बिल्डअप किए हैं आपने अपने माइंड में, उसी को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसका कंक्लूजन निकालेंगे. सो दैट इज नोन एज एनालिटिकल थिंकिंग. ओके, so let's see again. It is a kind of thinking which is about simplifying the complexity. The second definition, analytical thinking is the act of breaking down pieces of information into smaller and more understandable components or principles. It involves systematically dismantling data to require the facts which can be used to build upon the information of provide evidence-based conclusion. Okay, come to the next slide. What are the things which are important in the analytical thinking? Most important thing, it involves identifying an issue. अब एनालिटिकल थिंकिंग जैसे आप उस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन की एनालिटिकल थिंकिंग आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इशू, जो प्रॉब्लम, जो ट्रिक, जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे. Okay, you will first observe that question. Okay, so you will first identify that issue, you will first identify that trick, identify that particular problem or question. Next, gathering facts and evidence. Okay, after observing the issue, after observing the problem, you will gathering means you will collecting the facts and you will collecting the informations or evidence. That is the second thing which is involved in analytical thinking. Third most important thing is breaking complex information into smaller pieces. Okay, means you will see the large question and you will make it into the small pieces and you will try to understand. You will make it simple. Okay, the complex, what you have to do here, you have to change the complex question into the simple one. Okay, so identifying an issue, that is first. Second, gathering facts. Second thing, gathering facts and evidence. Third important thing is breaking complex information into smaller pieces. Fourth thing that you have to do, applying logic and reasoning. So first what you have to do, you have to observe the question. You have to gather the facts and evidence, means you have to collect the most important things from that question. Most important incident, most important things, the issues of that question. You have to collect the data. Third thing, breaking complex information into smaller pieces. जो complex information आपके सामने रखी गई है उसको small pieces में आपको break करना है. Most important next point is applying logic and reasoning. उसके ऊपर आप अपना दिमाग अब लगाएंगे. पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसको उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे. जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसमें से जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको आप सिंपल बनाएंगे और अब आप उसके ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे. ठीक है, so applying the logic and the reasoning, then evaluating the viewpoints and opinions, then you will come to the conclusion. Here you will going to analyze, you will going to evaluate the viewpoints. जो viewpoints आपने अपने mind में उसके बनाए हैं, जो opinions आपने बनाए हैं, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उसका evaluation करेंगे. ठीक है, तो आपने अपने माइंड में कुछ गेसिंग बनाए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. तो जो भी आपने गेसिंग बनाए हैं उसको इवैल्यूएट करेंगे. यानी आप बायस नहीं रहेंगे कि ये मैंने कंक्लूजन निकाला है तो यही इसका सही आंसर हो सकता है. ऐसा नहीं है, आपको उसको फिर से इवैल्यूएट करना होगा कि क्या ये सही है या नहीं है, इफ इट इज ओके और नॉट. यस, तो अपने ही ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, तभी अपने ही आंसर के ऊपर आपको डाउट लेना होगा. ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या नहीं होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए. यानी बायस नहीं होनी चाहिए इसका मतलब आप भी उसमें आते हो, यानी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है. ओके, सो इवैल्यूएटिंग द व्यू पॉइंट्स एंड द ओपिनियंस. Next thing that is involved in the analytical thinking is identifying patterns and cause and effect. Now you have to see the patterns of that question.
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वो, उसमें कुछ भी नहीं है, बट अगर आप उसका पैटर्न समझ पाओगे तो लाइट के बारे में कितनी कितनी जगह पे बताया गया है उस क्वेश्चन में. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पैटर्न, किस पैटर्न के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है और वो क्यों किया है. आपको उस आइडिया के तरफ लेके जाने के लिए फोकस किया है, या फिर उन्होंने उस पैटर्न को इसलिए यूज किया है कि ताकि वो आपके माइंड को कहीं और दिशा में कन्वर्ट कर सके, ताकि आप क्वेश्चन के तह तक या फिर आंसर तक पहुंचे ही ना. Yes, means the question has a different pattern, okay, which is going to confuse you. So you have to identify that pattern, you have to identify the cause, and you have to identify the effect. जो आपने आंसर उसका बनाया है, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, उसके पैटर्न को, उसके कॉजेस को और उसके इफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन. अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी होंगी उसी क्वेश्चन में, देखिएगा जरा. So you will see the extra information in that question. You have to delete it. You have to eliminate it. तो क्या सही है और क्या नहीं है, ये जैसे कोई स्टूडेंट जब आईएएस की स्टडी करते हैं, तो आईएएस की स्टडी करना यानी क्या होता है, सारी बुक्स पढ़ लेना, ऐसा होता है क्या? नहीं. कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए ये पहले पता करना होता है. क्या पढ़ना है ये तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में आना चाहिए. So that is the point which is connecting here, eliminating the extra information. Next, drawing and testing conclusion. After of all those things, you have to draw a conclusion. You have to test on that conclusion, and at the last you will get the new knowledge of that thing. Means you will get a particular conclusion, a last answer. So those things are involved in the analytical thinking. Okay, first identifying an issue, then gathering facts and evidence, then breaking complex information into smaller pieces, then applying logic and reasoning, evaluating viewpoints and opinions, identifying patterns and cause, as well as effects, eliminating extra information, extraneous information, drawing and testing the conclusions. You have to draw a particular conclusion on it. खुद के ऊपर भी आपके डाउट रहेंगे तब, उस पैटर्न के ऊपर भी आपके डाउट रहेंगे तब, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको डिलीट करना है. ठीक है. And then you will come to know the real fact, the real answer. So that will be your conclusion, and then you will get the real knowledge about it. Okay. So these are the things which are involved in analytical thinking. So here are main three components. First one is logical reasoning, which is related to analytical thinking. Second is decision making, and the third one thing here, that is problem solving. Okay, so those are three main important components. Logical reasoning, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि जिसके ऊपर आप अपना लॉजिक लगाएंगे, आपके रीजनिंग्स लगाएंगे. Okay, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है. What type of decision? Suppose two situations are there. So which one situation that you will choose? That is known as decision making. Third one is problem solving. यानी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो, कोई सिचुएशन हो कि जो एक कॉमन जो इंसान है कि उस सिचुएशन में पूरी तरीके से टूट जाता है, उस प्रॉब्लम में टूट जाता है, अगर आप में एनालिटिकल थिंकिंग है तो वो टाइम पे भी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सी, द प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज कमिंग इन आवर माइंड, in our life also, in our mind also. Means the problem sometimes can be mental problem, sometimes a physical problem, तो इस तरीके के sometimes emotional problem. तो ऐसे कुछ problems अपनी life में होते हैं, तो उसको कभी कभार face करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक अच्छा analyst वही होता है, एक अच्छा analytical thinker वही होता है कि जब problem को देखे, बराबर उसका solution निकालने के जब वो steps अपने mind में तैयार करें, क्योंकि problem को देख के डरना नहीं है, problem को देख के रोना नहीं है. Okay, so जो रोने लगता है इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है. So most important thing is जब आपके आंखों से आंसू बहना बंद हो जाएंगे, तब समझ जाओ कि आपके पास नॉलेज का कहीं ना कहीं स्रोत आ रहा है, कहीं ना कहीं आप में नॉलेज आ रहा है. छोटे बच्चे रोते रहते हैं, क्यों? नॉलेज नहीं होता छोटे बच्चों में, इतना लॉजिकल पावर, इतना रीजनिंग पावर, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें इन्फेंट्स में कहाँ होती है, छोटे बच्चों में नहीं होती. चाइल्डहुड क्या होता है, जब कुछ बुरा हुआ उनके साथ तो वो रोने लगते हैं, बट यू आर नॉट चिल्ड्रन नाउ. So you have to develop your analytical thinking. Means if whenever you will see the problem in your life, first time you have to take a step forward to solve that problem. Okay, one by one आपको उस प्रॉब्लम के तह तक जाना है, उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, उस प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं ले लेना है. If you will take it personally, it will hurt you.
सो द प्रॉब्लम जो है उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली लो ताकि उस प्रॉब्लम को आप आराम से क्या कर सको, सॉल्व कर सको. Again, next question for you, and you have to write the answer of that question in your chat box. See, you are driving along in your car on a wild stormy night. It's raining heavily when suddenly you pass by a bus stop and you see three people waiting for a bus. So who are those three people? देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले. Try to understand the question. You are driving along in your car on a wild stormy night. So this is the night period. It's raining heavily when suddenly you passed by a bus stop and you see three people waiting for a bus. Means you are on the bus stop, means you are passing from the bus stop and you found that there are three people which are waiting there for bus. अब ये three people कौन है? Number one, an old lady who looks as if she is about to die. The second person, old friend who once saved your life, and the perfect partner you have been dreaming about. So which one would you choose to offer a ride to, and knowing very well that there could only be one passenger in your car? So this is your question that you have to understand. अब ये मैं आज ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपके एनालिटिकल थिंकिंग क्या है और इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम लैंग्वेज इज अ बैरियर, मैम we are going to understand the question but the question's length is too long, this is a long message, this is a long question. इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकते हैं. So whatever the questions are coming in your mind, just write down in the chat box. Okay, so see the question, observe it well, and इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो लिखिए. जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो भी लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये बैरियर्स है क्वेश्चन यानी एनालिटिकल थिंकिंग करते समय इतने बैरियर्स आपको आ सकते हैं. ये आपको खुद को एनालाइज करना है कि अभी मन नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेंट नहीं है हम इतने. whatever you think, write in the chat box. You are driving along in your car on a wild stormy night. It's raining heavily when suddenly you passed by a bus stop and you see three people waiting for a bus. An old lady who looks as if she is about to die. An old friend who once saved your life. And the perfect partner you have been dreaming about. Which one would you choose to offer a ride to, knowing very well that there could only be one passenger in your car. Okay, so this is the question for you. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैम आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट अनेबल टू गिव द आंसर. अब क्यों अनेबल हो आंसर देने के लिए, इसके जो रीजंस होंगे दैट यू आल्सो हैव टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई विल गिव यू द आंसर आफ्टर द सेशन. See, sometimes we think that analytical thinking and critical thinking are same, but there are some differences that we find between analytical thinking and critical thinking. So what does it mean? Analytical thinking involves breaking down the complex information into smaller parts. Analytical thinking का मतलब यही होता है कि जो long messages आपको दिए होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, उसके short messages बनाओ ताकि आपके लिए समझने में वो आसान हो सके. So here in analytical thinking, most important things that are involved here, you have to take the long messages and from that long messages you have to break it into the small parts. Okay, उस long messages में से भी आपको छोटे छोटे मैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको हटा देनी है. आपने जो पहला आंसर बनाया है उसके ऊपर भी आपको पहले विचार करना है. यस, इवैल्यूएट करना है कि क्या ये सही हो सकता है या नहीं. यानी एनालिटिकल थिंकिंग में एक क्वेश्चन के लिए आपके माइंड में 2, 3, 4, 5 गेसेस या आंसर्स आ सकते हैं. Whether on the critical thinking, we find in critical thinking it involves taking outside knowledge into account while evaluating information. Critical thinking is different. Means here you are going to read a novel, and after reading that novel, after reading that particular book,
जैसे कि आपने कोई एक बुक पढ़ ली, किसी एक की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, तो कोई एक नॉवेल किसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने के बाद एक आउटसाइड नॉलेज आपने पढ़ा है, एक आउटसाइड इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, कहीं से किसी और की ऑटोबायोग्राफी या नॉवेल आपने पढ़ी है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। ओके, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके ऊपर क्रिटिकली आप वर्कआउट करते हैं, दैट इज नोन एज critical thinking. Okay, so there is some difference between analytical thinking as well as critical thinking. Analytical thinking involves breaking down complex information into smaller parts, and critical thinking involves taking outside knowledge into account while evaluating information. Okay, come to the next one. What are the most important requirements in the analytical thinking? Number one, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अगर आप में दिमाग की क्यूरियोसिटी है तो आप एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनालिटिकल थिंकिंग इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। सी द क्वेश्चन, ट्राई टू ऑब्जर्व इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमन सेंस। एनालिटिकल थिंकिंग में ये चीज होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। देन फोकस्ड, कॉन्शियस तो होना ही है, बट आपको फोकस्ड होना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो यू हैव टू बी concentrate a lot on that particular question. You have to focus yourself on the question. Then you will guess some points, then you will guess some information, and then आपके जो गेसिंग होंगे वो 3 4 5 ऐसे गेसिंग होंगे जिसमें आपके कुछ आंसर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So first, intellectual curiosity, then observation, common sense. You have to be focused on the particular problem, particular situation, particular trait. Means you have to concentrate there. Full concentration is very important. Full of concentration. Next, problem solving attitude is very important. तो problem solving के लिए आप क्या कर सकते हैं? Mathematical questions आप solve कर सकते हैं। ऑल्जेब्रा से ज्यादा ज्योमेट्री जिसको ज्यादा पसंद है उसका इंटेलेक्चुअल माइंड थोड़ा अच्छा खासा होता है। Next thing is balanced decision making, which is very important in analytical thinking. Next requirement of analytical thinking is connecting dots. So जो different information आप निकालते हैं उसको आपको connect करते आना चाहिए। तो curiosity होना जरूरी है और वो भी intellectual curiosity होनी चाहिए। Focused आपको करते आना चाहिए। Concentration is very important. Common sense, observation, your deep thinking, which is again very important. And next, you have to be able to ask the question. Questioning again is very important. एक एक्टिव एनालिटिकल थिंकर बनने के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, कॉमन सेंस, फोकस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, connecting the dots means rearrange the ideas, whatever the pieces of ideas that you have collected from a particular long question, particular long problem, you must have to connect those short parts of the problem. Okay, so these are most important requirements. इस रिक्वायरमेंट्स के सहारे आप उस क्वेश्चन की तरफ देखिए जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फ्लैट एज कैन बी, राउंड एज अ रिंग। तो पहले इसमें आप देखेंगे पहला पिक्चर जो है इट इज फ्लैट पिक्चर, सेकंड इज राउंड एज अ रिंग, एंड थर्ड वन हैज आईज, मींस हैज टू आईज एंड कांट सी अ थिंग। आईज तो है लेकिन चीजों को देख नहीं पाते, तो व्हाट इज इट, तो ये क्या है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। It's actually not an analytical question, but it's very simple question. इसके लिए थोड़े कॉमन सेंस की जरूरत होती है, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन में आपको यहाँ बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं। So see, this is the question. Flat as can be, round as a ring, has eyes and can't see a thing. What is it? You have to solve it, okay? And just take the screenshot of it. Try to solve it and give the answer in chat box. Come to the next important question. The quick brown fox jumps over the lazy dog. This is the question for you. Again, you have to write your answer in chat box. What is so special in the famous sentence? ये जो ऊपर sentence आपके लिए दिया गया है, क्या special है इसमें? So, if you can concentrate, please try to give answer in chat box. So those are the things.
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन एनालिटिकल थिंकिंग. आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये देखिए पहला पिक्चर, means it indicates the observation. It is the game of brain. Next thing, puzzling. Then analyze the things, reconnect and arrange the ideas. How can you improve your analytical thinking? So first, be an observant. पहले एक अच्छे ऑब्जर्वेंट बनिए, तब एनालिटिकल थिंक आप इम्प्रूव कर सकते हैं. A brain which can be sharp, a brain which can be active, which is very important here. So be an observant. So it is important for improving your analytical thinking. Next important thing is learn how things work. जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी ट्रिक्स को, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? यू स्टार्ट टू लर्न हाउ द थिंग्स वर्क. वो थिंग्स कैसे, उसका एक पैटर्न आपके माइंड में बन जाता है. किसी पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है, उसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न आप दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज करने लगते हैं, अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन हो तो. So this is the second requirement. This is the second thing that you can improve, learn how the things work. The third thing, that ask questions. This is very important. What is happening? Why this is happening? How this is happening? यानी WH से related जो सारे questions है वो आप क्या कर सकते हैं? यानी अपने ही mind में वो recover कर सकते हैं. जब आप question करेंगे तभी आपको उसके answers मिलेंगे. ठीक है? So this is important here. So be an observant, learn things, learn how the things work here. Then desire to succeed. That is very important. Whenever you are going to solve any problem, whenever we are going to solve any question, that time first and most important thing that should come to your mind, that is you must have a wish, you must have a desire to succeed. उसमें आपको जीतना है, ये आप पक्का कर लो. से डल माइंड के साथ रहोगे, पैसिविटी के साथ रहोगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. So you have to be active there. So be observant first and learn how the things work. Then ask the question to yourself. Ask again and again. Try to gain the answer. Try to recollect the information. Then desire to succeed. Then target action. Then read books. Think about your decision. जो भी डिसीजंस आपके हैं, जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आपने डिसीजन लिया है, उसके ऊपर आप थिंक करना स्टार्ट कीजिए. एनालिटिकल थिंक को इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं. देन प्ले ब्रेन गेम्स. देन लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे. हर दिन एक नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए. हर दिन आपके लिए नया होगा. हर एक दिन अगर आप नया कुछ सीखेंगे तो इससे एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी. अगर हम अपने लाइफ में एनालिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ाते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, जो इंटेलेक्चुअल स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा. And it will be effect on the society, it will effect on the particular country, it will effect on the society, it will effect on the particular development of a country. एक कंट्री के डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. जो अब तक चलते आ रहा है वही चलते रहेगा तो उसमें कुछ नयापन होगा ही नहीं. उसमें नयापन होने के लिए आप में नयापन आना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है. इसमें बैरियर्स क्या आ सकते हैं, जैसे लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट. देन लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर. देन प्रेजुडाइज. अगर आपके माइंड में कुछ प्रेजुडाइज बने हुए हैं कि ये इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये प्रेजुडाइज अगर आपके माइंड में है तो एनालिटिकल थिंकिंग में ये बहुत बड़ी रुकावट है. नेक्स्ट बायस्ड. अगर आप बायस्ड है, यानी ये तो कभी इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता, मेरी तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, एक चीज के ऊपर जब हम बायस्ड बन जाते हैं तो उसके ऊपर हम एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते. तो ये नहीं होना चाहिए, निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए. सो लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, लैंग्वेज, prejudice, biased, negative approach, and different cultural backgrounds are the barriers in analytical thinking. Again, a question for you. A killer was sentenced to death. 3 rooms are shown here. First room जो ऐसा है कि जिसमें फायर लगी हुई है. दूसरा रूम ऐसा है कि जिसमें एक साइको प्रिजनर बैठा हुआ है एक गन के साथ. और तीसरा रूम ऐसा है कि जिसमें एक लॉयन है जिसने 3 मंथ से कुछ भी नहीं खाया है. तो एक किलर जो है वो अब कहाँ जाएगा, ठीक है? Which room that he will choose. Now let's see the answer of today's questions. So this was the first question. You had to identify the triangle in this figure and the answer is 36.
Now I hope you will understand how observation is important in analytical thinking. Let's see the next question. Such type of questions are asked to misleading you. See how many times the reference of light has been given here. Actually, here there is no consult with the light. It is only used here to divert your mind so that it will get confused you or waste your time in thinking. Now, here see the references of light. Electricity was out, no street light, no traffic signal light, car's headlight broken, and suddenly the appearance of buffalo crossing the road. And again, we find a hint has given here. That hint is the perfect guess towards the correct answer. The hint is not even a moonlight. It indicates the daytime. It means during the sunlight, a driver can easily see the buffalo, can stop his car and give his way to cross the road. Next question. An object which is flat, shape is round, has two eyes means two holes. Only holes can't see. So naturally the answer is button. Button is flat, round and has two eyes like holes. Okay, come to the next question. The speciality in the sentence is it has all the English alphabets from A to Z. So there is no need to find out the meaning of the sentence actually. Just observe and check whether all the English alphabets from A to Z are appeared here or not. Next question. Here has clearly mentioned about night period. A situation has been given for you to know what will be your best choice. See the outside atmosphere in this sentence. It's a wild, stormy night, raining heavily. And now the situation before you. Suppose you are driving a car in such stormy night. In such atmosphere, people were waiting for a bus on bus stop. Number 1, old lady. Number 2, your old friend. Number 3, a perfect partner for you. The appearance of old lady is about to die. The old friend who once saved your life and a perfect partner for you. And the condition is you had to take only one passenger with you. So what will you do? The old friend saved your life first, no? So you can faith on him. You would give your car to him to drive. And the passenger would be that old lady who was appearing as she is about to die. So your old friend would drive car to bring that old lady to the hospital. And so you will offer your place in the car to your old friend. The passenger will be the old lady and you will go by walk with the partner to give her company. Okay, now come to the final question. There is a prisoner who has to choose a room in which he can hide himself and which will be safe for him. So the first option can't work here because there is a burning fire. The second option can be eliminated because there is a psycho prisoner who has a gun. So the first two options are ready to bring his death. And there is a lion in the third room. But who has been eating nothing for 3 months. So definitely he is not alive now. So there will be only a dead body of the lion. So it will be a safe place for the prisoner. Now I think you would understand well your keen observation, your intellectual curiosity, your ability to rearrange the small parts of the questions in a proper way can make you a perfect analytical thinker. And finally, I express my gratitude to the principal of S.B.City College, Dr. Maitre sir, for giving me an opportunity to attend here in this session. Thank you, sir. Thank you, dear students. Have a nice day. Keep observing the things around you as a good listener. Do practice. Start to use your logic and reasoning ability and improve your analytical skills. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, Amrapali ma'am. Now I invite Ms. Harsha ma'am from English department, S.B.City College to deliver her vote of thanks. On the behalf of the Department of English, Function Design Policy, I would like to extend my generous thanks to the principal of the college, Dr. S.B.City, for his support and cooperation. I also thank to the organizing
team for having such a wonderful session. I thank to the head of the department, Dr. M. Shindesar, for his support, IPSC coordinator, Dr. Kanzil Khanna. I extend a really hearty vote of thanks to our today's guest, Ms. Amrapali Modak, and I immensely thankful to all the participants for attending the session. Here, the today's session is over. Students, please visit the Google Classroom. Hope you are doing regular your assignments and quiz. I request you please to visit the Google Classroom.